Hello. So let's come to section A, that is reading comprehension. So what is comprehension? Comprehension means understanding or perception. You read. So what is comprehension? Comprehension means understanding or perception. So you read a passage, then you understand, and then you have certain perception about it. So what are the points to be carefully noted while attempting questions for comprehension? So let's discuss them one by one. So how to be effective while comprehending the passage. Go through the passage carefully and arrive at the general idea of the subject the passage presents. कि उस तक पहुंच जाओ, वो एक बार समझ लो कि passage आपको क्या कहना चाहता है. What is the general idea of the passage? Read the second time to get a better understanding of the passage. तो अगर आपके पास टाइम है या आपको लग रहा है कि आपने जल्दी से पैसेज पढ़ी है, एक बार उसको जल्दी से दूसरी बार भी रीड करने की कोशिश करो. सो यू कैन लर्न फोटोग्राफिक रीडिंग ऑल्सो. जल्दी से उसको एक बार रीड करो ताकि जो तुमने समझा है तुम्हें एक बार फिर से कंफर्म हो जाए कि यस यू हैव अंडरस्टूड द राइट थिंग. Arrive at the meaning of difficult words by relating them to the preceding and following sentences. तो words को relate करो कि जो भी words difficult words आ रहे हैं उनके meanings and by relating them to the preceding and the following sentences. So relate them with the sentences. Underline relevant words and phrases of the passages which can help you deduce the answers. तो जो रेलिवेंट वर्ड्स हैं या फिर फ्रेजेस हैं उनको साथ साथ आप अंडरलाइन करते जाओ क्योंकि वहाँ से आपको आंसर्स लिखने में हेल्प होगी. देन रीड द क्वेश्चंस केयरफुली. आंसर प्रिसाइजली यूजिंग सिंपल लैंग्वेज. जितना सिंपल लैंग्वेज में आप आंसर लिखोगे आपको बहुत ज़्यादा वर्ड्स अपने से डालने की ज़रूरत नहीं है. इवन यू कैन कॉपी इट डाउन फ्रॉम द पैसेज टू गेट गुड मार्क्स. जितना उसको सिंपल और टू द पॉइंट रखोगे उतने आपको मार्क्स बेटर मिलेंगे. Answers should reveal your understanding of the passage. This is very important. So there will be two unseen passages in your examination with a variety of short answers or MCQs, multiple choice questions to test comprehension, interpretation and inference. Vocabulary, word formation and inference of meanings will also be tested. So this is for 22 marks. So what's the total length of two passages? It will be between 1100 to 1200 words and there are three kinds of passages: factual passages, descriptive passages and literary passages. So let's come to factual passages. Factual passage क्या होता है? Description involves developing a complete mental picture of a particular person, place, object or beings. कि आप एक्चुअली फैक्ट्स को एक्सप्लेन कर रहे हो, जैसा देखा आपने वैसा का वैसा आप डिस्क्राइब कर रहे हो. A factual description allows the reader to get a comprehensive view of the subject under discussion. तो आपके सामने वो एक पिक्चर पेंट हो जाती है कि जो भी देखा है वैसा ही एक्सप्लेन हुआ है. तो वो चीज़, वो ऑब्जेक्ट, that thing, that person, how it would be. It involves a step-by-step description of the subject in the best possible manner. So step-by-step description होती है, so it involves in better understanding. In this way, the reader is able to compare or contrast the facts, data and other information that is relevant. A factual description is the detailed description of the physical attributes of the subject as it appears to the onlooker with the special features included. So this is a detailed description of the subject explained. Various subjects ranging from animate to inanimate have been described to enable the reader to frame an opinion of his own. Such descriptions either provide essential knowledge on the subject matter or provide a means of assessing the worth of the subject.
Often it is the description that allows the reader to make judgments for himself. So this is a description जहाँ से रीडर्स कुछ ना कुछ जज कर सकते हैं, उनकी कुछ ना कुछ परसेप्शन बन सकती है. The success of a good description lies in the ability to describe the subject to its nearest accuracy with current information on the same. तो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल पैसेज कौन सा होता है जहाँ पे बिल्कुल I mean, I don't say 100% परफेक्ट बट एक पर बड़ी परफेक्शन से एक्यूरेसी के साथ इंफॉर्मेशन दी हो और दैट टू द करंट इंफॉर्मेशन. सो नेक्स्ट इज डिस्क्रिप्टिव पैसेजेस. वो क्या होते हैं? ग्रेट आर्टिस्ट यूज वाटर कलर्स, ऑयल पेंट्स और चारकोल टू मेक द कैनवसेस दे पेंट ग्लो विद कलर, डेप्थ एंड हिंट्स ऑफ मिस्ट्री. तो कोई भी चीज डिस्क्राइब करना, मे बी थ्रू राइटिंग, मे बी थ्रू कलर, कोई भी चीज को एक इलेबोरेटेड वे में डिस्क्राइब करना, दोज आर डिस्क्रिप्टिव पैसेजेस. ग्रेट राइटर्स यूज वर्ड्स टू डू द सेम थिंग. जैसे पेंटर्स कलर्स यूज करता है, जो राइटर है वो क्या यूज करता है? वर्ड्स. पेंटिंग वर्ड पिक्चर्स दैट ग्रिप योर रीडर शुड बी द गोल ऑफ एवरी राइटर. तो इस तरह से वर्ड्स के साथ पिक्चर पेंट कर देते हैं राइटर, सो दैट आप देखते हो कि कई सारे राइटअप्स ऐसे होते हैं कि हम एकदम से पढ़ते जाते हैं उनको, हम कहीं रुकते नहीं है. So this is the beauty of the detailed description, efficiently written by the writer. The words you choose are what gives your settings that memorable blow your characters their depth and your plot enough mystery to keep your readers completely involved. Descriptive passages need powerful verbs and adjectives that evoke the emotions. तो इसमें बड़े powerful verbs और adjectives चाहिए होते हैं. So let's come to literary passages. So what are literary passages? Literary word is related with literary works concerning with the content of literature, anything that is related to literature. Literature is in the form of short story, novel or movie. तो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, या short story या novel या movie. For example, if we choose to analyze the movie Cinderella, our first step would be to consider what is the bigger meaning of the story. कि actually ये जो इसका meaning है, what does the story want to tell us? For example, if we choose to analyze the movie Cinderella, our first step would be to consider what is the bigger meaning of the story. That means what is the main theme of the story. So as I told you, this is called the theme. So a theme is a recurring idea or insight found in the text. Writer selects the broad topic like friendship, love, good or evil, and then present in the form of a story. Various parts of the story are called the literary elements. So अलग-अलग जो part story के होते हैं उनको क्या बोलते हैं? Literary elements. So these parts are imagery, character, symbolism, setting and plot. So you can think critically about the whole write-up. So when you read the whole write-up, you first of all understand, then you judge, then you evaluate, and then you make certain perceptions, and then you are able to think it critically. So in the literary passages, first step is to come up with the theme. So सबसे पहला step क्या है कि come up with the solid theme and support it with the literary elements.